Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. We had already completed 2 units of population and gender education in which we had discussed certain topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. And today we are going to begin it is unit third, that is the gender studies, and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is the concept need and scope of gender studies. and ये जो टॉपिक है ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करते हैं विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जेंडर स्टडीज़ जो है इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड which is a formal area of study in education and research, and it is interdisciplinary in its nature, means it combines knowledge from different subjects, like from sociology which studies the society, psychology which studies the human behavior, and history which study the past roles of genders. So together ये जो subjects हैं they help us to understand gender in a complete way. इसके अलावा इन जेंडर स्टडीज़ जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो आल्सो एनालाइज की जाती हैं. सो इट फोकसेस ऑन द जेंडर आइडेंटिटी विच मीन्स हाउ ए पर्सन सीज देमसेल्व्स लाइक मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी, and also gender representation which means how gender is shown in media, society and culture. and ये जो gender studies है this has evolved from women's studies. earlier जो gender studies है it was called as women's studies, जिसमें पहले फोकस किया जाता था on problems that were faced by women या gender inequality. our time जो women's studies है it had evolved, it had expanded because जो gender issues हैं that now affect everyone rather than just women. so it had expanded, it had evolved, which now include the problems related to men, LGBTQ plus या intersections. so it includes men and masculinity, LGBTQ plus identities that are the diverse gender and sexual identities, and intersectionality that is how genders connect with their caste, class, race या religion, which make this field more inclusive as well as realistic. I hope it is clear to you. First of all, talking about the concept and meaning of gender studies. जो concept and जो meaning है gender studies का that revolves around the core concept of sex versus gender, जो कि हमें बहुत ही important concept देखने को मिलता है in gender studies. If we talk about sex versus gender, you may know जो sex है it refer to biological differences that are based on our body structure, chromosomes या hormones, like for example male, female या intersex. while जो gender है it refer to social and cultural roles, और we can say these are the roles जो कि society हमें provide करती है, और we can say what society expect from men and women. like for example अक्सर कहा जाता है कि जो boys हैं they should be strong and girls जो है they should be caring. so ये जो concept है this is not a natural concept but they are socially constructed, जिनको हम अपनी societies के through सीखते हैं. इसके अलावा जो gender studies है this is also based on the idea of social constructionism. social constructionism जो है this means कि जो gender है that is not inborn but it is created by society, and इसको हम सीखते हैं from our society especially through family, school, media or through religion and through culture. like for example जो boys हैं उनको cars दी जाती हैं और जो girls हैं they play with the dolls. so ये जो this is how ये जो gender है gender roles हैं this shapes our behavior from childhood. इसके अलावा ये जो gender studies है it is also interdisciplinary in its nature. gender studies जो है it use knowledge from many subjects, like from sociology we study the gender roles in society, from history we study the role of women in past, literature we study the representation of genders in different books, psychology we study the gender identity development, political science which studies the power and laws. so
through these subject जो gender studies हैं that provide us deeper and complete understanding regarding the genders. इसके अलावा जो जेंडर स्टडीज़ है दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंटरसेक्शनलिटी, जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न कंसेप्ट देखने को मिलता है इन जेंडर स्टडीज़. एंड इंटरसेक्शनलिटी जो है इट मीन्स कि जो पर्सन की एक्सपीरियंस होती है दैट डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स टुगेदर. लाइक फॉर एग्जांपल एक पुअर वुमेन जो है शी फेसेस मोर चैलेंजेस देन ए रिच वुमेन, और एक डिसेबल्ड वुमेन जो है शी फेसेस डिफरेंट इश्यूज देन एन एबल्ड बॉडी वुमेन. सो ये जो जेंडर है इसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं एट अलोन, बट इसको हम स्टडी कर सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट इट टू द अदर आइडेंटिटीज़. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर जेंडर स्टडीज़. जो जेंडर स्टडीज़ है यह हमें फंक्शनल नेसेसिटी देखने को मिलते हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल देखने को मिलती है फॉर द डेवलपमेंट. एंड विदाउट जेंडर स्टडीज़ जो सोसाइटी है दैट कैन नॉट प्रोग्रेस फुली, एंड इकोनॉमी जो है दैट विल लूज इट इज़ पोटेंशियल वर्कफोर्स. ठीक है, एंड ये जो जेंडर स्टडीज़ है दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स जो है these are basically the division of roles that are created by society. Like for example division between the role of boys and girls. Like for example blue box for boys and pink box for girls. So ये जो stereotypes है, जो division है, this create limitation. And there are also deconstructive methods that also exist in our societies, and gender studies जो है that help to break these myths or false beliefs. Like for example अक्सर कहा जाता है कि जो मेंस है they do not cry, या जो वुमेन्स है they are weak in science. So gender studies जो है that break these false beliefs or myths which limit the opportunities or that harm the mental health. इसके अलावा जो जेंडर एजुकेशन है दिस ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एड्रेस द जेंडर बेस्ड वायलेंस. जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है it is violence that is based on the gender, including domestic violence, sexual harassment या discrimination. and इसके जो root causes हैं that may be patriarchy and toxic masculinity. Patriarchy you may know it is a male dominated system, and toxic masculinity जो है it is a harmful expectations from men including aggression and dominance. So gender studies जो है it identify these causes and suggest solutions. इसके अलावा जो जेंडर स्टडीज़ हैं यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो जेंडर इक्वालिटी है दैट लीड्स टू हायर GDP. लाइक जब वुमेन जो है व्हेन दे ऑल्सो वर्क दैट लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी, मोर इनकम जो है दैट इज जनरेटेड, एंड इकोनॉमी जो है दैट ग्रोज फास्टर. And there are also certain barriers to female participation, or we can say problems to female participation, including the lack of education, social restrictions, या wage inequality. So gender studies जो है that also address these problems, which help us to identify these barriers and to suggest policies to remove them. ठीक है, इसके अलावा जो जेंडर स्टडीज़ है इट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स. वी यूजुअली से राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स. सो जो जेंडर स्टडीज़ है इट एंश्योर राइट्स फॉर ऑल जेंडर्स लाइक वुमेन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स या नॉन बाइनरी राइट्स. सो जो जेंडर स्टडीज़ हैं दिस फोकसेस ऑन इक्वालिटी प्लस डिग्निटी प्लस फ्रीडम. ठीक, इसके अलावा जो जेंडर स्टडीज़ है इट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबींग. लाइक फॉर एग्जांपल अक्सर कहा जाता है कि जो मैन होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड अवॉइड द मेंटल हेल्थ हेल्प. सो दिस मे बी द bad idea, while it is also said that कि जो women है they often ignore in medical treatment. So these are some biases जो कि जेंडर स्टडीज़ एक्सपोज करता है, जो कि अल्टीमेटली इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर सिस्टम्स को. ठीक है, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज़.
जो स्कोप है जेंडर स्टडीज़ का वो हमें बहुत ही वास्ट देखने को मिलता है, जो कि कवर करता है ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। जो जेंडर स्टडीज़ है इट ऑल्सो स्टडी द हिस्ट्री और वी कैन से historical perspective. Like for example, जो gender studies है, it study the feminist movements, it study the different waves of feminist movements like first wave, second, third, fourth, etc. इसके अलावा it also study the hidden roles of women and marginalized groups who were often ignored in the history books. So gender studies जो है that also brings their contribution to the light. Similarly, in sociology and culture, जो gender studies है, it studies the socialization or process of gender roles, learning gender roles from parents, schools, friends, which starts from birth. As well as media representation, it also studies how media shapes the gender ideas from movies, ads, yeah, social media, that how it can reinforce stereotypes or how it challenges them. Similarly, in political and legal dimensions, जो gender studies है, it studies the political participation like women in politics या LGBTQ plus representation, जो कि हमें बहुत ही important देखने को मिलता है for equal decision making. Similarly, it also studies how law affects the gender differently like marriage laws, property rights या reproductive rights. So जो gender studies है, this analyzes the fairness of laws as well. Similarly, in economics and labor, जो gender studies है, it studies glass ceiling और these are the invisible barriers जो कि prevent करते हैं women को from reaching the top positions, जो कि exist करते हैं even when women is or qualified, as well as unpaid labor, that is the work done without the payment including housework या child care, which is mostly done by the women, which is not counted in GDP. So this also study the these unpaid labor conditions. Similarly, in masculinity studies, this also studies the pressure on men, expectations from men like be strong, do not show emotions, etc., as well as impact of mental health issues on men या aggressive behavior. इसके अलावा in queer and transgender studies, it studies beyond binary, beyond male and female, including LGBTQ plus identities या gender diversity. And it also study rights, social acceptance, history of marginalized communities, etc., which ultimately promotes the inclusion and equality. ठीक है, I hope it is clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो gender studies है, it is a very dynamic and interdisciplinary field जिसमें इन्वेस्टिगेट जिसमें एक्समाइन किया जाता है हाउ जेंडर स्टडीज जेंडर्स शेप इंडिविजुअल लाइव्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट देखने को मिलता है फॉर चैलेंजिंग इनइक्वालिटीज़, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एज वेल एज also for the inclusive development, which makes gender studies highly relevant subject in modern education as well as in society. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.